You all are presiding officers of labor courts of Bihar. I think one or two labor courts are vacant in Bihar. One. Bhagalpur is vacant. Okay. Who is in charge? मेरा है सर. आप कहाँ के हैं? Okay. First of all, I would like to know from all of you, each one by one, when you have joined and what work you are discharging there, and what kind of cases you have come across in your courts. पांडे जी प्लीज बताइए, बैठ के बताइएगा. अगस्त 2021 में ज्वाइन किया था सर, छपरा में हमें. और केसेस में दिल्ली आईडी एक्ट का रेफरेंस, कुछ डायरेक्ट केसेस भी हैं, मिनिमम वेजेज एक्ट के हैं, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हैं, और बहुत नॉमिनल बीएससी के हैं, बिहार शॉप एस्टेब्लिशमेंट. Bihar shops and establishment. Okay. The reference cases which come before you under Industrial Disputes Act, what are those cases? हमारे जुडिशियल में तो शुगर फैक्ट्रीज और एमआर दो केसेस हैं. इनका बेसिक जो रिक्वायरमेंट बने, इनकी डिमांड है शुगर फैक्ट्री में वही डिवीजन आते हैं. इनका शुगर फैक्ट्री जो है उनका वेज बोर्ड होता है. उनका कहना है कि वेज बोर्ड के हिसाब से पेमेंट नहीं देते. एक मेन इशू उनका वो रहता है. जो सीजनल एम्प्लॉय होते हैं उनका दो डिमांड होता है कि या तो हमको परमानेंट करें या सीजनल परमानेंट करें. ये तीन तरह के डिमांड शुगर फैक्ट्री में होते हैं, और इसी डिमांड के बाद उनको टर्मिनेट कर देते हैं ऐसा फैक्ट्री वाले. अच्छा. जब डिमांड रेज होता है, डिस्प्यूट बढ़ता है, कंसिलिएशन फेल होता है, उसी बीच में या उसके पहले जनरली सर्विसेज उनकी टर्मिनेट कर देते हैं. तो और एमआर में है कि एमआर में दो चीज़ें होती हैं, या तो इनको ट्रांसफर आउट करते हैं, और जब ये नहीं ज्वाइन करते हैं तो इनको टर्मिनेट कर देते हैं. वही इंक्वायरी, प्लेस ऑफ इंक्वायरी रख देंगे बॉम्बे, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद. हाँ, वो एक है, रख देंगे बॉम्बे में, रख देंगे, और अहमदाबाद में रख देंगे डोमेस्टिक इंक्वायरी. पता चल रहा है हमारा बिहार जो टेरिटरी का है वहाँ पहुँच नहीं पा रहा, और ऐसे करके उनको टर्मिनेट कर देते हैं. वो कैसे होती है. मुंगेर वाले जो साहब हैं, आप बताएं आपके यहाँ किस तरह के केस हैं? मेरे यहाँ सर अभी टोटल 15 या 16 केसेज हैं, जिसमें 3 रेफरेंस केसेज हैं. बाकी कुछ WC हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के, कुछ पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट के, 3 मिनिमम वेजेज के भी हैं. इसमें रेफरेंस केसेस तो हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के अगेंस्ट है, जो मानव बल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के रिक्रूट हुए हैं, उन्हीं का है. वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के तहत अभी तो हम लोग पूरा मेरिट टेस्ट किए नहीं है. अब हो सकता है कि वो किस डायमेंशन में जाए. ओके. बताइए मिश्रा जी. सर पूर्णिया में है. अगस्त में ज्वाइन किया था सर 21 को. सर मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, आईडी एक्ट के अंदर रेफरेंस केसेस हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन के कुछ केसेस हैं. रेफरेंस तो चल ही रहा है सर. यही सब 4 कैटेगरी, बेसिकली 4 तरह के हमारे पास अभी केसेस हैं. ओके. Sir, I'm in Patna. In addition to being PO Labor Court, I am also as a judge of ESI court. So I have 458 cases now, और उसमें से अराउंड 200 केसेस तो ESI के ही हैं. रेफरेंस केसेस मेरे पास यही रीस्टेटमेंट और टर्मिनेशन से रिलेटेड मैटर्स के भी हैं. मजेठिया वेज बोर्ड में न्यूज़पेपर एम्प्लॉयज़ का वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट है, उसके भी हैं. MR वगैरह के भी होते ही हैं. उसके अलावा कुछ कंप्यूटेशन के होते हैं आईडी एक्ट में 33C2 पे. एक नाउन को मॉनिटरी उनका बनता है, राइट. पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस की 2 और 3 केसेस हैं रिस्पेक्टिवली. तो वो ज़्यादा नहीं है, मतलब पटना में ज़्यादा नहीं है, मतलब ऑल टाइप. ओके.
बिहारी में सर मिनिमम वेजेस एक्ट और पेमेंट ऑफ वेज एक्ट के ज़्यादा केसेस हैं। बेसिकली सो एलईओ सर जो दाखिल करते हैं वो के द्वारा दाखिल किया होता है, रिपोर्ट टर्न अप नहीं होता, इससे प्रॉब्लम होती है इसको। What are those cases which have been filed by the LEO? सर जो लोकल में कहीं खेत में कोई मजदूरी कर रहा है तो एलईओ के माध्यम से लेबर सुपरिटेंडेंट ने शिकायत किया कि मुझे वेजेस नहीं मिल रहा है, जो मिलना चाहिए मिनिमम वेजेस नहीं मिल रहा है। खेत में काम कर रहा है? जी जी, अच्छा। खेत में काम कर रहे हैं, कहीं कंस्ट्रक्शन मजदूर होते हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं, इस तरीके हैं सर। तो सर वो केस सर वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट के हैं सर, और आईडी एक्ट के सर 33C में कुछ केसेस हैं और रेफरेंस केसेस हैं। और तो एलईओ जो खेत वाले केसेस फाइल करता है वो किस एक्ट में फाइल करता है? मिनिमम वेज एक्ट में करता है। ओके, मिनिमम वेजेस एक्ट क्या डेफिनेशन है वर्कमैन का? आज कल से तो डिस्कशन हुआ होगा मेरे ख्याल से। यू मस्ट टेक केयर। सो उसमें सर जो लिस्ट ऑफ शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट दिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है और स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। तो उस शेड्यूल के तहत कृषि मजदूर भी सर आता है, तो वो जो कृषि मजदूर सब होते हैं उसके तहत वो उनका जुडिशियल बन जाता है, और उसमें जो भी लेबर काम करते हैं, कृषि मजदूर काम करते हैं, तो उसके तहत You must be you all mindful of the jurisdiction you are having or given by the law to all of you. हाँ बताएं। सर सभी टाइप के केसेस हैं मेरे यहाँ लेबर लॉ से संबंधित, तो रेफरेंस केसेस हैं, आईडी एक्ट के केसेस हैं, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस है, गेसी एक्ट के हैं, और वर्कमैन कंपनसेशन के भी हैं, ऑल टाइप ऑफ केसेस आते हैं। ओके, आपका? मुजफ्फरपुर से हैं और हमारे यहाँ भी डिफरेंट टाइप के केसेस हैं सर। आईडी एक्ट में डायरेक्टली 2A में जो फाइल होता है वो भी है, रेफरेंस वाला भी है, केसेस 33C2 में कंप्यूटेशन के लिए भी है, इसका वर्कमैन कंपनसेशन का है, पेमेंट ऑफ वेजेस का भी है, मिनिमम वेजेस का भी है, इसके बाद में कुछ केसेस मजिठिया वेज बोर्ड के भी वो है सर। ओके सर डालमिया नगर में पोस्टेड है सर, जनवरी में पोस्टेड हुए वो तो इंडस्ट्रियल इलाका वहाँ पे ज़्यादा सर। केसेस होते हैं। हाँ सर, वहाँ रेफरेंस में सर सीमेंट फैक्ट्री के भी हैं, और सर जो रेलवे में स्लीपर बनते हैं सर उसके भी हैं, कुछ वो निकाल दिए जाते हैं, तो एमआर वाले भी हैं सर, इलेक्ट्रिशियन। एमआर मतलब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सर। तो उनका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में आता है, किसमें आता है? उसी में सर रेफरेंस। और उसके बाद सर वर्किंग जर्नलिस्ट का भी केस है सर, जैसे मजीठिया वेज बोर्ड से जो संबंधित है सर, और मिनिमम वेजेज में भी है सर, पेमेंट ऑफ वेजेज में भी है। Okay. I am assigned with the topic of contract labor prohibition and regulation act 1970. I will be discussing it just after some times. First of all, I would like to know that from where you derive your power. Where is the provision given of the labor judges or labor courts, and what are the jurisdiction given to them under the law? Where is it provided? Section 7, exactly. And what are the areas you have been assigned with that you can look into those disputes? Where is it provided? हर सेक्शन का हर एक्ट का अलग अलग है सर। आईडी एक्ट में शेड्यूल 2 में दिया हुआ है। Yes, शेड्यूल 2 में है। That I wanted to know कि शेड्यूल 2 क्या कहता है? शेड्यूल 2 में सर वो लिस्ट दे दिया है। Yes. लास्ट में क्या लिखा है? ऑल केसेस अदर देन शेड्यूल 3। मैंने Yes. ट्राइब्यूनल में जो देखे जाएंगे उसके अंदर जो सेंट्रल इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को जो जुरिस्डिक्शन दिया हुआ है उसको छोड़ के आप देखेंगे, और अदर देन दैट जो नोटिफाई किया जाएगा वो भी देख सकते हैं, which is not within the jurisdiction of central industrial tribunal or industrial tribunal. तो ये माइंडफुल होना है इसके लिए पहले कि कहाँ से आप jurisdiction आप डायरेक्ट करते हैं और क्या jurisdiction है आपका। और then comes की कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या कहता है। इसके डिस्प्यूट जैसा आपसे हमने जाना कि अभी आपके सामने नहीं है, लेकिन एक इनका seemingly some cases lying in his jurisdiction, contract labor act. So what kind of those cases are coming before all of you? जैसे फॉरेस्ट में मजदूर काम किए, सीजनल प्लांटेशन के लिए नर्सरी में लगाते हैं, 6 महीना के लिए बाद में निकाल देते हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी वाला भी इलेक्ट्रिसिटी में है,
इलेक्ट्रिसिटी सर वो में नए केसेस बहुत फाइल हुए हैं सर। इलेक्ट्रिसिटी केसेस में उसमें है। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कंपनी ने सर किसी बीच में किसी कॉन्ट्रैक्टर से कहा, वो अपने सर इंटरव्यू वगैरह लेकर के उसको रखा, और बाद में वो लोग हड़ताल पे चले गए, तो हड़ताल पे गए तो इन्होंने उनसे बोल के दूसरे लोगों को रख लिया। तो ऐसे आए हैं सर, क्या वो किस श्रेणी में आएंगे सर, वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर वाले किस श्रेणी में आएंगे? I will be giving overview of Contract Labor Act. Second Finance Commission came up with a concept that the workmen, we are using the term workmen because it is provided in the law. Though the name of the act has been kept to be Contract Labor Act, but the definition which has been provided in the act is workmen. The Second Finance Commission came up with the concept that the laborers, contract laborers, in other words, the workmen which is defined in the act, they are being exploited by the industrialists, businessmen and contractors. They came up with the concept that to regularize their employment or to prohibit their employment in certain establishments, there should be a law. And then this Contract Labor Act, Abolition and Regulation Act 1970 came into existence in 1970. What is the definition of workman? We will see it. जब मेरा चश्मा लेके आइए तो टेबल से wherever in any establishment there are 20 or more workmen employed, the Contract Labor Act will be applicable to that establishment. This should be known to all of you that there may be cases if some establishment is employing only 10 or 2 or 5 or 15 workmen, and some complaints comes before you or reference comes before you that my grievance should be adjudicated here in your court. So that cannot be entertained. There must be the strength of 20 or more workmen in any establishment to be covered under Contract Labor Act 1970. Definition has been given in Section 2. And Section 2B defines workmen, who can be regarded as contract labor. A workman shall be deemed to be employed as contract labor in or in connection with the work of an establishment when he is hired in or in connection with such work by or through a contractor, with or without the knowledge of the principal employer. There may not be the possibility of knowledge to the principal employer. Principal employer does mean the owner of the establishment who is running that business or establishment. The occupier may be so that occupier definition will also come under Industrial Dispute Act and Factories Act. Occupier has been defined. What is the contractor? That is defined in Section 2C. Who is the contractor? Contractor is in relation to an establishment, means a person who undertakes to produce a given result for the establishment other than mere supply of goods or articles of manufacture to such establishment through contract labor, or who supplies contract labor for any work of the establishment and includes a subcontractor. Is it clear? For the running of establishment, for the business or for the purposes of establishment, if some contractor is hired and through that contractor, contract laborers are being employed in the establishment for the purposes of the work of the establishment, they are called as contract labor. And
when you will see section 2B, it says that it may not be within the knowledge of the principal employer, though it is required to be within the knowledge of the contract labor. That we will be discussing later on. What is the establishment? It is defined in section 2E. Establishment means 1. Any office or department of the government or a local authority, or 2. Any place where any industry, trade, business, manufacture or occupation is carried on. Any industry, trade, business, manufacture or occupation is carried on. Even it is also applicable to the departments of the government or a local authority. If they are employing contract laborers through a contractor, this act will also cover them, those offices or departments. Then comes principal employer. It is also an important term, should be known to all of you. It is defined in section 2G. Principal employer means 1. In relation to any office or department of the government or a local authority, the head of the office or department or such other officer as the government or the local authority, as the case may be, may specify in this behalf. This is one. And the second one is, in a factory, the owner or occupier. Owner and occupier both are two terms. In small units, there would be owner. In big units, like he was referring to some factory, you were also referring to sugar factory. It is big units, and there may be occupier. In a factory, the owner or occupier of the factory, and where a person has been named as the manager under Factories Act. Manager of the factory under the Factories Act 1948, the person so named. So, who will be the principal employer in case of a factory? It may be owner, it may be occupier, or it may be a manager named under Factories Act 1948. In a mine, though mines are not there in Bihar, but we should know it. In a mine, the owner or agent of the mine, and where a person has been named as the manager of the mine, the person so named. In any other establishment, any person responsible for the supervision and control of the establishment. There may be small units. The person who is supervising the affairs of that unit, he'll be the responsible person and he'll be regarded as principal employer. Then comes another important terminology, which is wages. Wages shall have the meaning assigned to it in clause 6 of section 2 of Payment of Wages Act. And who are the workmen? It is defined in 2I. Workman means any person employed in or in connection with the work of any establishment to do any skilled, semi-skilled or unskilled, manual, supervisory, technical or even clerical work for hire or reward, whether the terms of employment be express or implied, but does not include any such person. Here discrimination has been made. A, who is employed merely in managerial or administrative capacity. When you actually adjudicate the matters related to MR, you need to actually see whether they are working in managerial capacity or supervisory capacity. They are not covered under Industrial Disputes Act. There are several diseases. Then B, who being employed in a supervisory capacity draws wages. Here is the condition. Even supervisory capacity person may also come under this act. Who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 500 rupees per mensem or exercises either by the nature of the duties attached to the office or by reason of the powers vested in him, functions mainly of a managerial nature. He says, if somebody draws salary per month below 500 and not discharging the
work which is of the nature of managerial work, he may also come under this act. But the thing is, I don't think anyone is drawing salary under the amount of 500 rupees. When they are speaking about payment of wages act, this should have been amended. But it is still being kept in this act as it is. Then C, who is an out worker, that is to say, a person to whom any articles or materials are given out by or on behalf of the principal employer to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, repaired, adapted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employer. And the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises not being premises under the control and management of the principal employer. They will also not come. There are few decisions I will be actually telling you later on after giving an overview of the important provisions of this Act. Chapter 2 gives the provisions in regard to Central Advisory Board. There would be Central Advisory Board under the Government of India, State Advisory Board under State Government, and then power to Central Board and State Boards to constitute committees required for effective implementation of this Act. I don't think that is required to be discussed in detail before all of you. Then Chapter 3 gives the provisions relating to registration of establishment employing contract labor. This is an important chapter and to be discussed before you. What this Act requires is, if any establishment or factory or business unit intends to or requires to employ contract labor through a contractor, is required to be registered. It must be known to all of you. They should be registered with the registering authority. Who are those registering authorities? They are assistant labor commissioners, deputy labor commissioners in the districts. Certain format is given in this Act, not required to be discussed in detail before all of you. Under those formats, necessary informations is to be furnished before the registering authority. Nature of work regarding which the establishment requires to employ the contract laborers through a contractor is to be given. Details of that should be furnished in that format, and necessary fee is to be deposited. This registration is one-time registration. They are not required to renew it. Once any establishment is registered, that is forever. Then a contractor who intends to work as a contractor to supply labor to any establishment or factory or business unit, he is also required to have a license under this Act. There is format provided in this Act. He has to furnish necessary details, and he is required to deposit some security money with the registering authority, and some licensing fee is to be deposited. The security money deposited by him is returnable. When he stops working or his license is lapsed, the security deposit given by him before the registering authority will be returned to him. This license is issued year by year, and there is provision that if he intends to work beyond a year, he is required to get it renewed before his license is elapsed by depositing necessary fee and by furnishing fresh application to renew his registration license. So there is a query
as such in our codes named as Contractual Employer Act. Basically, I wanted to know whether it is a substantial act or procedural act, because as mentioned by my batchmate that we have cases of electricity board, वो सब या तो रेफरेंस केसेस में आते हैं, एक्ट उसके अंदर मेंशन नहीं होता, उसके अंदर वही है कि आपने कॉन्ट्रेक्चुअल पर रखा. हमारे पास पीडब्ल्यू में भी इस तरह के केसेस हैं, और जिस तरह के सर मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एक्ट नहीं पढ़ा है बट बीएससी एक्ट पढ़ा है, सारी डेफिनेशन मोर और लेस सिमिलर है. बीएससी एक्ट व्हाट? बिहार शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट पढ़ा है. ऑलराइट. जहाँ पर यहाँ 500 रुपीज़ थे वहाँ 15,000 है, और एमआर वगैरह जब आते हैं तो रेफरेंस केस में उसके बारे में बात करते हैं, और ये मैनेजरियल कैपेसिटी के ऊपर एमआर विल नॉट कम अंडर दिस एक्ट. MR will not come. MR will not come, but point First, is let me discuss the provisions. I will come to that. Ki where such kind of dispute may come before all of you, and how, and what kind of dispute may be referred to you or may directly come before your courts. Under this act, it is mandated that the contract laborers should be paid wages in accordance with the provisions of Minimum Wages Act, Payment of Wages Act, and you can call, if it is applicable, Payment of Bonus Act. In their respect, EPF Act is also applicable. There may be, I am referring to your question, there may be a dispute with regard to EPF Act relating to contract labor. That may also come. You may not be knowing because you are not aware of this act as of now. Because of that, you are not actually visualizing that kind of case has come before you or may come before you. Under this act, it is also provided that necessary facilities should also be provided to the contract laborers, like some sitting place, a place where they can sit, where they can have their food, urinals, if ladies are employed, breastfeeding place should be given, crèche should be provided, and so many facilities which are provided to regular workmen, that is required to be provided to them also. This is provided in Chapter 5. The canteen should be given to them, facilities should be made available to them, restrooms, first aid facilities, other facilities. If the contractor, Section 20 provides that, if the contractor does not provide these facilities to the contract laborers, it is the liability of the principal employer to provide all those facilities to all the contract laborers employed in his establishment or factory through a contractor. Sir, if who not provides? If contractor does not provide, it is the liability of the principal employer. That does mean he has to ensure that these facilities are being provided to the contract laborers. Sir, if you go by definition, basically the worker works at place of principal employer. So Okay. sir, how contractual या contractor और I would say immediate employer उसको कहा जाएगा by that sense, contractually ले लेते हैं इस केस के अंदर. वर्क तो सर वो कर रहा है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के यहाँ, तो प्राइमरी ड्यूटी तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की होगी ना, वो कॉन्ट्रैक्टर नहीं कराएगा का कंसेप्ट नहीं समझ में आया सर, क्योंकि बेसिकली प्रॉमिस इज मैनेजर. Brother, this is the law. नहीं सर, मतलब मे बी इट इज If that is the law, there may not be any question. Law is law. प्रैक्टिकल होता क्या है कि वर्क वहाँ कर रहा है. Generally. प्रिंसिपल ओनर के ही प्रेमाइजेस में कॉन्ट्रैक्टर से Any one of you have worked in any private organization or any factory? No. That's why. Actually, it is the onus of the principal employer to provide all these things. Generally, contractor does not provide. But if he has got some premises out of the factory premises or the business unit premises, he is liable to provide. Big contractors do provide. But small contractors who actually provide contract laborers for any establishment, they do not
they do not have facility to provide those things. So it is the duty then falls on the principal employer to provide those facilities, because in a factory all these things are provided. It has been allowed to the contract laborers to use them. If there is urinal, they can use. Rest facilities, restroom is there, they can use it. Canteen is there, they can use it. That kind of thing. It is the duty on principal employer to ensure that payment of wages or minimum wages are being complied by the contractor. And he is under obligation, statutory obligation, to appoint one representative at the time of disbursement of wages to the contract laborers. Sir, what is that provision, sir? It is the section 21. If the contractor fails to pay the wages to the contract laborer, it is the duty of principal employer to ensure the payment. Ensure does mean, if the contractor has taken the bill but he has not paid and he has made default, even though principal employer has to pay on its own, and he is actually having his rights to realize the same from the contractor in any manner in accordance with law. Then there are provisions of penalties and procedure in chapter 6. If obstructions are being made to inspector who has been empowered to do inspections, there is imprisonment provided. A provision has been made for imprisonment of 3 months or fine of 500 rupees or both. In the same section, subsection 2, there is provision that if inspector desires some document is to be produced before him, is willfully not being produced before them, then the person who is liable for such default is liable to be prosecuted, and there is provision of imprisonment for a term which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 500 rupees, or with both. Then section 23. 23 says that if any of the provisions of this act is being contravened, the person who is contravening may be prosecuted before the competent court of law, which will be discussed later on. And there is a provision of punishment, which is, it may imprisonment which may extend to 3 months, or with fine which may extend to 1,000 rupees, or with both. And in case of continuing offense, continuing contravention, in that case additional fine which may extend to 100 rupees for every day, for each day contravention. And there is section 24 which talks about other offences. If any person contravenes any of the provisions of this act or any rules made thereunder for which no other penalty is elsewhere provided, the same kind of punishment has been provided here, which is imprisonment which for a term which may extend to 3 months, or fine of 1,000 rupees, or with both. Then there is section 25, offences by companies, who may take cognizance, though it is not actually related to all of you who are holding labor courts as its presiding officers. It is in actually criminal power which has been vested with the magistrate of the first class, who can take cognizance of offences under this act. Limitation has also been provided.
limitation is 3 months from the date of alleged commission of offence. There are some decisions I will refer for your help. One landmark judgment of Madras High Court is there. Workmen of Best and Crompton Industries Limited. Crompton, you must be knowing that company. Versus Best and Crompton Engineering Limited, 1985 का है. Where it has been held that if the workman is not hired through contractor holding a valid license, contract labor has been though employed through a contractor, but the contractor is not having valid license. Two things come before all of you. One, he is infringing the law. Prosecution can be done both to the contractor as well as to the principal employer before a magistrate. And second, the dispute may come before you, which is what is the status of that workman or contract labor. What it says, if the workman is not hired through a contractor holding a valid license under the Act, he would be a workman employed by the management itself. And later on, plethora of decisions have been rendered by the Supreme Court. Like first decision was of Haryana Electricity Corporation case, which was landmark one. Then Air India Statutory Corporation case, and many others. In these cases, it was held by the Supreme Court that one condition was this, that if the contractor is not having valid license and contract laborers have been employed in the establishment, he will be deemed to be the workman of that establishment. Secondly, if the contract labor has been employed on perennial nature of job, there is prohibition. There is provision under the law. If perennial nature of job, some contract labor has been employed through a contractor, even though the establishment has been registered with the registering authority or the contractor is having license under the Act, but it has been decided by Supreme Court that in this situation, the contractor goes off and direct relationship between the principal employer and the workman is established. That does mean that labor will be regarded as the workman direct workman of that establishment or factory or business unit, whatever the case may be. Then there is one decision of Supreme Court 2006, which is the Steel Authority of India Limited. There are several cases related to Steel Authority of India Limited and Food Corporation of India. You will find so many cases. What it says, there may be occasion that somebody comes before you and says that in such and such factory or establishment, you should pass an award that there should be prohibition that they cannot employ contract laborers. That power is not vested with all of you. This decision clearly says, though term industrial code has been used, but it also applies to you. You or industrial tribunal do not have power to pass an award that any particular establishment cannot employ contract labor and it is prohibited. You cannot prohibit. Then comes another decision, Rajesh Kumar versus Union of India,
It is of Delhi High Court, 2003. On issuance of prohibition under Section 10(1) of the Act, prohibiting employment of contract labor or otherwise, in an industrial dispute brought before it by any contract labor in regard to conduct of service, industrial adjudicator will have to be interposed, mindful, on the ground of having undertaken to produce any given result for the establishment or for supply of contract labor for work of the establishment under a genuine contract, or is a mere ruse camouflage legislation is so as to deprive the workers of the benefits thereunder. Such kind of matters may also come before all of you. Suppose, at this juncture I want to discuss because it came to my mind. Payment of wages, minimum wages, ESI Act, EPF Act, all those acts are applicable to contract laborers as well. There may occasionally arise that some contractor, and for that matter, principal employer also, they do not ensure the adherence of Payment of Wages Act or Minimum Wages Act or EPF Act, Payment of Bonus Act, if at all it is applicable to them, because number of days are required for the application of the provisions of Payment of Bonus Act. And then that person comes before ALC or DLC that look, I'm not being actually paid according to this, or my EPF is not being deducted. Reference or conciliation fails there. That reference comes before you. You have power to adjudicate that. Then Industrial Disputes Act come into application. You derive power from there to adjudicate any reference which has been, which has connection with this act. I mean, related to contract laborers. Is that clear? R.K. Panda versus Steel Authority of India, Supreme Court. It says that primary object of the act is to stop exploitation of contract laborers by contractor or establishment. The act does not purport to abolish contract labor in its entirety. Similar decision has been given by Supreme Court in Dinanath versus National Fertilizers Limited. The Act does not provide for a total abolition of contract labor, but it provides for abolition of contract labor in appropriate cases. What you were talking about, there is one decision of 1982 Supreme Court, People's Union for Democratic Rights versus Union of India. So kindly repeat. People's Union for Democratic Rights versus Union of India. Obligation to provide amenities conferred by the Act to the workers is on the principal employer. Then there is other decisions. I don't think it is required to be noted down by you. What has been decided precisely, I will tell all of you. A principal employer has to ensure that contractors, workers are paid minimum wages. Then another decision, if the contractor fails to pay wages to his employees engaged by him, the principal employer will be liable to pay the same. This act also mandates to principal employer and contractor to
submit periodic returns in prescribed formats to the licensing authority or registering authority as the case may be. And defiance of the same invites prosecution. दो चार मिनट हो. Generally, under this act, the disputes which may come before you may relate to Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, and may also come under Employees Provident Fund Act. Generally, what happens to the contract laborers is the contractor and principal employer, in connivance, they do not deduct their EPF. And if they have deducted, they do not deposit it. They do not open the EPF number, EPF account of the contract laborers. So on that count, injustice is being done with the contract laborers. One decision was Standard Vacuum Refining Company of India versus its workmen and others. Initially, 1960, before this act came, that decision is very important. But subsequently, this observation was finally decided by Supreme Court in Haryana Electricity Board case and Air India Statutory Corporation case. What was decided in this case was, if the job is of perennial nature, what I was talking about, if the job is of perennial nature done by the contract laborers, and if less salary is being given to the contract laborers when compared to regular workmen, the court can order regularization of service of the contract workmen with the principal employer. That power is with you. If that kind of dispute or controversy comes before you in proper way in accordance with law, either by way of reference because of the failure of the conciliation before the conciliating authority, conciliation officer, or directly before you, that power is with you. So that award can be passed within the purview of law. Gammon India Limited versus Union of India, 1974 SCC. In this case, interpretation of various provisions of this act and related rules were made, and it was decided that. Sir, kindly tell about the citation of this case, of this Gammon India. Is it available? Yes, that is the 1974 SCC in bracket L and S bracket close 252 Judiciary. Judiciary 252. It was held that various facilities, wage payment manner, duty of contractor and principal employer were broadly interpreted in this case. It was also held that contract labor statute is constitutionally valid. Yes, this is very important. You may also note it down.
Hussein Bhai versus Alath Factory, ALATH Factory, comma, Tej Bilali Union, TEZBILALI Union, 1978, in bracket 2, LLJ, Labor Law Journal, 397. What was held there? A workman under CLRA Act, Contract Labor Regulation and Abolition Act, is also a workman under Industrial Dispute Act. What I was discussing earlier. He is also a workman under Industrial Disputes Act. A contractor would be the employer of such person. The principal employer under the Act would be employer under ID Act in certain circumstances. Therefore, the workman that has been contract labor, who has been termed as workman under Contract Labor Act, is also a workman under Industrial Disputes Act. In one case, Gujarat Electricity Board case, 1995 LLR 552 Supreme Court का है ये. In this case, Supreme Court ordered absorption of most of the contract labors by appointing a committee. And this was the Air India Statutory Corporation case I was referring. AIR 1997, Supreme Court 645. In this case, court ruled that the linkage between the contractor and the labor, I was talking about this, snapped, and the direct relationship stood restored between the principal employer and contract labor as its employees. Later, in another landmark judgment, Steel Authority of India versus National Union of Waterfront Workers and others, AIR 2001, Supreme Court 3527. Lastly, to sum up the overview discussion made before all of you, we can say that this is the act which is meant to provide protection and security to the workers employed on contract, and it seeks assurance that all other labor laws which are applicable to them, for example, Payment of Wages Act, Minimum Wages Act, EPF Act, Bonus Act, ESI Act, those are actually made applicable to them, and they are not exploited by the contractors and principal employers. That is all about Contract Labor Act. If any query is there, you are at liberty to make. There is a small query here, sir. Sir, the provisions under this act are like good, appears to be good, but point is that how practicable those would be. Again, but it would be a matter of law, because हमें पहले समझना होगा प्रिंसिपल एम्प्लॉयर कौन कहाँ पर है. जनरली हमारे पास केसेस आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के आ रहे हैं, तो आफ्टर रीडिंग और आफ्टर टेकिंग लेक्चर फ्रॉम सर, इट इज क्लियर दैट वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल एक्ट के अंदर आ रहे हैं. Exactly. अब हम इस तरह से लेकर चले सर, हमारी कोर्ट में भी जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होते हैं वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है, बेल्ट्रॉन के थ्रू आ रहे हैं. प्रिंसिपल एम्प्लॉयर शायद हमारे ऑनरेबल
मतलब अपना हाई कोर्ट या फिर रजिस्ट्री वट एवर इट वुड बी। अब सर यहाँ पर प्रोविजन इतने स्ट्रिक्ट दिखाई दे रहे हैं कि प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि एक आदमी को ऐसे मतलब रिप्रेजेंटेटिव बनाए जो एश्योर करे उन्हें मिनिमम वेजेस मिल रही है कि नहीं, वरना पनिशमेंट्स भी हैं। Yes. और सर पॉइंट ये किस तरह से आएंगे, तो बेसिकली अब तक तो हमारे पास कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का कोई केस ही नहीं आया। कैजुअल वर्कर एक अनदर एस्पेक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ इन द सेंस बिकॉज बिहार में पैटर्न क्या है कि कैजुअल वर्कर रखा जाता है, डेली बेसिस वर्कर रखा जाता है और उन्हें बैक वेजेस तक भी नहीं मिल पाती जब वो रिइंस्टेटमेंट होने जाते हैं। तो मतलब ये एक्ट किस तरह से हमारे लिए, या हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हम कोई जजमेंट ऑर्डर करें, और क्या हम कभी जजमेंट के दौरान मेंशन कर सकते हैं प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को या लेबर कमिश्नर को कि क्यों आप 21 का कंप्लाइंस नहीं कर रहे? I will give two examples. One is of any factory. Suppose it is Hindalco at Renuko. That kind of organization do employ contract laborers through a contractor for certain work, like porting work. If they have to pick some raw material or any final product from one place to another to be kept in godown, or again from godown to trucks for supply to the parties or out of the factory. Though it is perennial nature of job, because Hindalco works throughout the year, but it has not been prohibited by the competent government, be it central government or state government. There may be dispute with regard to contract laborers that they are not being paid payment of wages in accordance with the provisions of Payment of Wages Act or Minimum Wages Act, or their EPF account has not been opened. Their deductions are being made under EPF Act, but account has not been opened and it is not being deposited, nor cards are being given to them. What are the deductions which have been made from their wages, or how it has been deposited in their account. That kind of dispute may arise and conciliation may be done, or reference may come to you, or direct complaint may come before you. One aspect. Then comes minimum wages. Minimum wages is, suppose 306 rupees per day is minimum wages as on date for unskilled labor. That is not being insured by the principal employer, or principal employer is though paying to the contractor, but contractor is not paying in total. He is retaining the money and then is paying, say, 200 rupees, 250 rupees, or as the case may be. That kind of dispute may come before you, that you have to adjudicate or pass an award for its implementation, and back wages should be paid. You will also pass an award that back wages, whatever you can say short payment has been made during any particular period, you will pass an award that be insured to be paid to the contract labor, any particular contract labor. So these kind of disputes or grievances may come before you, and that you are bound to adjudicate in accordance with the provisions of Industrial Dispute Act, read with contract labor. That is also applicable to Food Corporation of India. Generally, the laborers are employed in Food Corporation to handle with the food grains kept in the gunny bags, in godowns, or for transportation, and a large number of disputes come before the labor courts or conciliation officers for adjudication or redressal of their grievances. That may also come before you. That you have to. These are the examples, illustrious examples that may come before you. पंडित जी और कुछ? क्या पंडित जी आपका? ठीक है? पूरा समझ में आ गया? आप तो पुराने समझदार आदमी, जब से ट्रेनिंग भी लिए हैं। क्या पंडित जी याद है? जी जी जी। Sir, the line said by sir is quite prevalent about him. Always prevalent, admitted, fact admitted is not.
और किसी को कोई क्वेरी? हाँ, आपके यहाँ ज्यादा केस आता होगा हमारे ख्याल से। सर नेचर डिफरेंट रहते हैं सर, जैसे फैक्ट्रीज वगैरह कुछ हैं सर, मैक्सिमम तो बंद हो गई सर, लेकिन फिर भी सीमेंट फैक्ट्री है सब, स्लीपर सेल वगैरह वाला ये सब भी है जो है सर, कुछ केसेज हैं उस सब के। और देखिए, यू आर इन अ कैपेसिटी वेयर यू कैन रेंडर जस्टिस, करना चाहिए। जैसे कल हमको पता चला कुछ लोग आप लोगों से बोल रहे थे कि हमारे यहाँ केसेस नहीं है, किसके यहाँ या केसेस कम है? नहीं है तो मीटिंग बुलाइए। किसकी मीटिंग बुलाइएगा? कॉल ए मीटिंग ऑफ डीएलसी या डीएलसी जो भी हो, एलईओस की बुलाइए कि साहब उनसे पूछिए कैसे आपके यहाँ केस आएगा। उनके यहाँ रेफरेंसेस तो आते हैं, वो लोग लेके उसको सोए रहते हैं। क्यों सोए रहते हैं बताइए? पार्टी पैसा नहीं देता है। पार्टी नहीं पैसा देता है, जिसके अगेंस्ट वो ग्रीवांस है वो पैसा देता है। बात समझ गए? उनको बुलाइए, उनसे पूछिए कि कितने रेफरेंसेस आपके पेंडिंग। तो ये सर बुला सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है? एकदम बुला सकते हैं। डीएलसी को कैसे बुला सकते हैं? एकदम। क्यों? डीएलसी यू आर नॉट सबऑर्डिनेट टू डीएलसी। तो वो भी तो हमारा सबऑर्डिनेट। स्टेट गवर्नमेंट नहीं, आपका सबऑर्डिनेट होगा। क्यों? उनके रेफरेंस को ही आप एडजुडिकेट करते हैं। उसके बाद ना जब वो रेफर कर देते हैं, रेफर करते हैं तो वो अगर तो उनका एरेना हो गया। यू हैव बीन अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट to adjudicate the disputes relating to different labor laws, which is predominantly required to be sent through the conciliation officers. If they are sitting idle on the references, how the cases will come before you? If they are not, एलईओस की मीटिंग हम बुलाए। they are the feeder. एलईओस सर डीएलसी से नीचे हाँ, होते हैं, बहुत नीचे। एक तो वो आए नहीं, ऊपर से जब हम मीटिंग बुलाए और जो ऑलरेडी पेंडिंग केसेस थे उसमें भी जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, इसके लिए हम लिखा पढ़ी भी किए। वो मेरे यहाँ केस ही जो एक तो फाइल करते थे वो भी बंद कर दिए। वो फाइल करने लगे अब एलसी के यहाँ ही कंकरेंट पावर था, एलसी का और एसडीओ का भी रहता है, तो वो उसके यहाँ फाइल करने लगे। मेरे यहाँ केसेस फाइल होता है। हाँ, तो वो तो दूसरी चीज हो गई। एक साल में मेरे यहाँ 5 केसेस फाइल होंगे मुश्किल। देखिए, उनको उनके ऊपर अगर प्रभावी होना होगा बहुत सारे तरीके हैं। बताया जाए सर, लेबर कमिश्नर को लिखिए कि भाई हम बैठे हैं, यहाँ केस ही नहीं है। लेबर कमिश्नर को सर हमने रिफर किया कि हम 1 साल हो गई मेरी पोस्टिंग को, एलईओस के द्वारा मैंने करीब 3 जिला रहता है सर अंडर में, तो करीब 20 एलईओ होंगे, लेकिन सब मिला के 5 केसेस फाइल किए गए हैं। या तो बहुत अच्छा चल रहा है कंडीशन लेबर्स का, और या तो ये काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं। रिमाइंडर करिए। दूसरा एक और तरीका है, हालांकि वो एडवेंचर होगा, लेकिन एडवेंचर हमारे हिसाब से वो लेजिटिमेट होगा। इसका ड्रॉबैक ये होता है सर, हम लोग का बजट नहीं मिलता है जो सैलरी का होता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसे ही इनफॉर्मली या फॉर्मली आप घूमते हुए जज साहब के यहाँ चले जाइए। आप कहाँ पे पोस्टेड हैं? बेगूसराय में अजय जी हैं सर। आप घूमते हुए चले जाइए उनके पास। सर हम लोग को कोई नहीं पहचानता। पहचान आप अपना पहचान आवाज के लिए सर बता दे, आवाज के लिए देखिए उनके पास चले जाइए और उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मॉनिटरिंग सेल की मीटिंग में हमको भी बुलाइए और इनको बुलाइए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उनसे जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए और मॉनिटरिंग सेल में आपको भी बुलाइए। ये कर सकते हैं। ये कहाँ मिलेगा आपको? तो ये सब कीजिए। आप अपने टूल्स जो हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। वो सब आपके छाते के नीचे आके घूमेंगे सर, और छाता लेके आपके लिए। हमारा ये कहने का मतलब नहीं कि उनका शोषण करना है या उनको जबरन दिखाना है कि नहीं साहब मैं ज्यादा पावरफुल हूँ। एक्चुअली आपको अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है, उसके लिए जो लेजिटिमेटली करना है वो दैट यू कैन डू। दैट इज अनदर वे दैट यू कैन इम्प्रेस अपॉन देम कि आप केसेस हैं या जिस केस में नहीं अपीयर हो रहे हैं उसमें अपीयर हो। ये सब चीजें आप लेके जाइए। पहले तो ये जानकारी कर लीजिए कि कितने रेफरेंसेस कितने दिन से लेके सोए हुए हैं। सर उसका आइडिया तो नहीं मिलेगा ना? तो बिल्कुल मिल जाएगा। उनके पास कैसे आता है सर? रिफरेंस तो डायरेक्ट कोर्ट को आता है वहां से। कंसिलिएशन का जो रेफरेंस आता है वो डायरेक्टली उन्हीं पास जाता सर है। कुछ मेरे यहाँ सर नए डीएलसी अभी आए हैं गया में, नए सर उनका जो था ट्रांसफर हो गया, उन्होंने भेजा है सर 15-15 साल पुराने हैं।
रेफरेंस ना मतलब हाँ, वो सर 15 साल 20 साल पुराने मामले रख के सोए हैं। ये जो नए आए हैं इन्होंने कहा कुछ नहीं, ये आपकी बात को, इस वर्कमैन की बात को ये नहीं माना, इसको डिस्प्यूट दिखाते हुए सब भेज दिए। ये सारी जगह होगा, तो सर सारे जिलों में होगा। 15 साल वाले रखे हैं। मैंने आपको मूल मंत्र बता दिया कि उसकी जानकारी कीजिए, चाहे किसी वकील को जो कॉन्फिडेंस में हो, कॉन्फिडेंस का मतलब कि फेयर कॉन्फिडेंस में हो, और उसके थ्रू चाहे आरटीआई भी हो सकता हो, तो जानकारी करें कितने रेफरेंसेस आपके पेंडिंग हैं और कितने साल से अलग अलग पीरियड का बताइए, लेके आइए जज साहब से बताइए, मॉनिटरिंग सेल में जाइए, कहीं देखिए व्हाट फॉर आई एम अपॉइंटेड हियर। तो सर ये तो हमको लौटा देना इंटरफेरेंस चाहिए। उनके स्पेयर में इंटरफेरेंस नहीं होगा। कैसे स्पेयर में वो इंटरफेरेंस तो होगा? पेंडिंग तो इसलिए रखे नहीं है कि ये पेंडिंग है, हम्म। वो वाटर शीट चलाते रहते हैं, वो भी जैसे हम लोग का रिकॉर्ड का चलता है, और लास्ट में दिखाते हैं कि ये कंसलेशन फेल हुआ, नहीं माने तो हम भेज रहे हैं। तो अगर इस दौरान हम उनको ये बात कहीं से ट्रेस करके और टच करते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कैसे इंटरफेरेंस है? दे आर द फीडर ऑफ लेबर कोड, अगर वो नहीं फीड कर रहे हैं तो लेबर कोड की कोई मतलब ही नहीं है। दे आर नॉट ओनली फीडर सर, वो कंसिलिएटर है और वो कंसिलिएशन करेंगे, अगर कंसिलिएशन फेल करेगा तब वो भेजेंगे। बिल्कुल, और मैक्सिमम फेल करता है। आप देख लीजिएगा परसेंटेज there is no देखिए, time, sir, there is no time prescribed कर गया for यही problem certain है, the conciliation। कह रहे हैं वो 5 साल से चल रहा है नहीं conciliation। तो रीजनेबल वर्ड फिर क्यों है? The reasonable sir, where is the reasonable Sir, word for ये conciliation? If somebody is workman on labor, सर प्रॉब्लम यही है, अगर उसका टाइम चेक कौन करेगा? indefinitely आप you will keep pending his reference or his grievance, so what justice you are doing? सर कभी कभी लेबर आ जाता है सर, हमारी कोर्ट ठीक ऊपर है लेबर सुपरिटेंडेंट के, लेबर खुद आ जाता है, कहता है सर मैनेजमेंट आता है उसी की सुनते हैं, सुन नहीं रहे हैं सर, हमारा केस भेज भी नहीं रहे हैं। इसलिए तो सेक्शन उसका भी तरीका है, जब वो आपके यहाँ आ गया सर, वही बात उससे लिखित में कंप्लीट कीजिए, उसी को आप प्रोसीड नहीं, कर वो तो आईडी लीजिए। एक्ट में प्रोविजन ही आ गया, अब प्रोविजन ही है कि अगर वो वो डायरेक्ट कर 45 सकता दिन है। के बाद अगर आ गया तो बिल्कुल। वह केस ही फाइल कर देना हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, उसको कहिए कि तुम हमारे यहाँ केस फाइल करो, एक पन्ने का तो हाथ से लिख के दे देना है, वही शुरू हो जाएगा। हो ही रहा है अब तो डायरेक्ट और बहुत उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है आपके यहाँ। होते हैं डायरेक्ट केसेस 2A में हो रहे हैं अब। बट सर ऐसी कंडीशन में हम एक केस यहाँ फाइल कर रहे हैं, वी हैव प्रोविजंस, एलाइड प्रोविजंस, सीआरपीसी 210 एक्सेट्रा, कि वहाँ कंप्लेंट केस भी चल गया और जीआर अगर हमें पता चले, एफआईआर पुलिस केस पता चले तो हम अपना रोक देते हैं। अब सर मान लीजिए वहाँ अब यहाँ पर हमने उसका केस एडमिट कर लिया है, नहीं क्यों रोक देते हैं? तो आप वहाँ से फाइल सर मंगवा सर लीजिए। सर हम एक नहीं बेसिकली वहाँ सर डेविएट हो जाएंगे। क्वेरी इज, जब मान लीजिए हमने यहाँ पर एक केस इस तरह से ले लिया, हमारे पास वो आया, आपको 45 दिन ऊपर हो गए, हमारे पास आ जाओ, अब एक हमने ला लिया, बाद में पता चल रहा है रेफरेंस भी करा रहा है, ऐसे कौन कैसे चीजों आप फाइल मंगवा लीजिए देखिए वहाँ से। देखिए, when he has come for adjudication by the labor court and the case has directly come before you under your jurisdiction, you can call for the file और आप अपना तो नहीं कर करिए। सकते हम, लेकिन जब अगर रेफरेंस हमारे यहाँ लेटर ऑन आ गया तो क्लबिंग का प्रोविजन है। बिल्कुल, आप उस फाइल को वहाँ पे क्लब कर दीजिए, ऑर्डर पास कीजिए। सर जनरली ऐसा भी होता है, हमारे वहाँ 2-3 केस में देखे हैं कि वो एएलसी को अप्रोच करता है एप्लीकेशन के फॉर्म में, तो वो परमिट भी कर देता है कि ठीक है आप जाइए कर लीजिए, कर देता है, कर वो देता है। चिट्ठी लगी हुई है हमारे वहाँ 2-3 केस कहता है, थोड़ा सा माइंड एप्लीकेशन पे आपके यहाँ केसेस भी आएंगे और ये जो डाउन ट्रॉडन है उनको जस्टिस भी आप दे सकते हैं, पुणे कमा सकते हैं, समझ गया ना? तो थोड़ा माइंड, अब थोड़ा ये लेबर लॉ जर्नल वगैरह मिल जाए, एलएनजी वगैरह मिल जाए, दैट इज वेरी यूजफुल। वो कहीं से मिल जाए या ऑनलाइन मिल जाए तो उसको पढ़ना चाहिए, आपको बहुत सारे सवालों के जवाब उससे मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच।